Hare Krishna. So, happy good afternoon, all of you. So, if I am able to see Indranil, Bhaskar, and Rishabh. So, how are you all? Please let us know how all of you are doing. Some more of your friends are going to join very soon. So, we are just 4:01 now. We shall start in just a few minutes. So, if everything is fine from your side, please write in the chat box. Everything fine or EF. Thank you so much, Bhaskar and Rishabh. So today's session is really going to be very much a rocking one. And hopefully the previous session you had also got a lot of values, a lot of understanding, a lot of learning as well. So today's session, as all of you know, that is emerging from identity crisis. अपनी पहचान की जो क्राइसिस है, कठिनाई है, उससे उबरना आज का क्लास है उसके ऊपर. So it's very important topic today, and we'll be actually getting to learn so many wonderful things today, and hopefully all of you are quite prepared for it. Okay, so if you are prepared, if you are really enthusiastic to really go ahead with this, please write in the chat box enthusiastic or ENTH so that I could quickly go ahead with today's session. Not waiting much because time is very precious. So we shall go ahead with our session today. Yeah, thank you so much, Bhaskar, Amia, and some more of you. I'm waiting for your responses. Thank you so much, all of you, for prompt responses. So I'm going to share my screen. Yeah, here you go. So, okay. Okay. So today we are actually into emerging from identity crisis, and mainly the thing what we will be discussing, that is who am I. So what are the things we are going to discuss today? There are some few things we shall be discussing, and before I start anything to speak over it, I just want to have a small little prayer for the empowerment and the mercy, so that this talk and these meetings could be of some fruit and some improvement in all of us together. Okay, so you could also repeat after me if possible. It's a very wonderful Sanskrit prayer. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. So this is actually the way of living in Vedic and Sanatan culture. Everything should be started with very wonderful prayers, as we just now did. Okay, so warm welcome to all of the new participants, those who are just newly joining. Chiranjeev and Rajdeep and Vishal. So welcome to our today's session. I just started. So these are things we shall be discussing today. What are they? Let's go ahead. So we shall be just recapping for a few things what we have discussed previously. पिछले सेशन में हमने जो डिस्कस किया था, और we shall be seeing code of honor. आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने आपको थोड़ा देर के लिए म्यूट कर लें. When I will call upon for unmute, you can, yeah, that's great. You can also unmute yourself and very much interactive. So we shall be discussing code of honor.
और हम लोग देखेंगे बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है। और हम लोग देखेंगे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं और उनका बहुत तरह का सॉल्यूशन भी है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। व्हाट इज द फैक्चुअल सॉल्यूशंस और द फैक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ओके, एंड आल्सो वी शैल बी सीइंग हु एम आई, हम कौन है, and what is the junction of different species. Human life is a junction of many species, and we shall be discussing upon that. So hopefully you are ready for just around one hour of very powerful pack in which you get to learn so many wonderful things. And I just want to tell you that this is just not a like one way interaction and just you are hearing and just you are on other side of wave world and I'm other side. So in this way what we can do is we can have some interactive sessions. I mean, I will ask to you to just write on something. So in this way what happens, things become very interactive and मजा आता है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इंटरेक्टिव रहें। मैं अगर बोलूं, अगर कुछ लिखने को तो लिखें और हाथ उठाएं अगर कुछ ऐसा प्रश्न है कुछ भी। तो an inquiry if you have, then you can raise your hands, you can ask questions very frankly. So recap. So in previous sessions, many things we discussed, right? So I just before going to that, I just want to ask you right now, any two things, if you remember, कोई भी दो चीज पिछली क्लास का, पिछले सेशन का, अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. It will be very nice if you could just write down in the chat box. Write in the chat box what two things which is really like it's really just stuck with you and still that is still there with you. आपके साथ अभी भी है वो चीज जो आपको याद है पिछले सेशन का. Okay, so quickly please go ahead and please think about it, like just for a few seconds. Think about it. Close your eyes and just think about it. What we discussed in the previous session. What sorts of things? Anything you feel remembering, just write it down. Just write it down. Yeah, that will be great. And if you want to remember also that also you can write it down. Okay, Rishabh is telling our senses are imperfect. Whatever we feel, whatever we thought, all of those are wrong. Yeah, correct. We saw that our senses are imperfect. We have 4 types of defects, and one of the defects is our senses are imperfect. Correct. Rajdeep is telling that elephant story. That's great. So elephant story, in that we saw that 6 blind men just came out to search out who is elephant or what type of like how the elephant looks like, and somehow they'll end up getting nothing practically. So yes, correct. And some more of you, I'm expecting some of the responses quickly. If we have, please go ahead. Just write down some of the things, whatever you feel like remembering. जो भी आपको लगता है कि कुछ उस टाइप का था, तो just you can just pen it down, just type it down. It is a very wonderful experience for me because I feel encouraged when I find like you are able to get it little bit. Okay, Rajdeep is telling elephant story, and after that, okay. So let me go ahead. So these are the things we discussed practically in the previous session. We learn 3 ways of gaining knowledge. 3 तरह का होता है रास्ता जिससे हम लोग knowledge प्राप्त करते हैं. What are they? Seeing is believing. That's called pratyaksha pramana. Then contemplating or trying to guess it. Oh, हो सकता है ऐसा, हो सकता है वैसा. That's called अनुमान प्रमाण. And also we saw fallacies of pratyaksha pramana and अनुमान प्रमाण. प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का क्या गड़बड़ी है उसको भी हमने देखा. उसके बाद हमने देखा शब्द. श्रुति is the ultimate source of knowledge. श्रुति मतलब कि hearing from the bona fide authority. That's the ultimate source of knowledge which is beyond 4 defects. प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में क्या प्रॉब्लम था कि हमारी जो इंद्रियां हैं, our senses are actually imperfect. It's not perfect. Just one example of that is
There is electromagnetic spectrum spread like anything, the unlimited number of wavelengths, and in which only 4 nanometer to 7 nanometer we can see. That's called visual range. And apart from that, we are simply blind. So like this, there is different fallacies of our senses, and that's why this Pratyaksha and Anuman Praman is not so powerful way to get knowledge. And at last we came to know what's called Shruti Praman. Shruti, I mean knowledge which is coming from the person who has created the things. Like person who has created the thing, he can give the knowledge of thing in most authorized and bona fide way. Okay, that's called Shruti. That Shruti is nothing but Vedas. Okay, so Vedas is called Apaurusha, which has never created by a mortal like us. Vedas have already been there for time eternity. It is called Sanatan. मतलब कि इसका कभी भी ऐसा टाइम नहीं था, टाइम t equal to 0 जब वेदों को बनाया गया था. Knowledge, Vedas synonyms with knowledge, and knowledge having no time when it was immersed at first time. Okay, so this Vedas is actually nothing but perfect knowledge, and this knowledge, this way of getting knowledge is it will never cheat you. ये आपको कभी चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है? So that's called Vedas. And also at the last we saw power of spiritual sound. We know that sound is having very great power. Banging sound can create mess. Bomb sound can create destructive effects like anything. But previously in महाभारत के युग में बड़े बड़े वेपन्स होते थे जो कि पूरे पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की शक्ति रखते थे. वो मंत्रों के द्वारा उनका एक्टिवेशन होता था. तो मंत्र में भी बहुत पावर होता है. तो अभी भी वो मंत्र अभी भी मौजूद है. जिसको अगर कोई मेडिटेट करे तो he can have very powerful influence upon his own particular life and well as the society. So also we saw a very specific mantra of this age, that is called Hare Krishna Mahamantra. We got to introduce with this Hare Krishna Mahamantra in the previous session. So this is all we actually talked in the previous session. So just to remind you back again, and also we'll have code of honor. So today is very special personality going to come in front of you. I think you might be knowing him very much. So in the first session I told you about All Nightingale, and today I'm going to tell you about someone who is actually the personality who has revolutionized the whole world into Vedic and Sanatan culture to think more and more vigorously. And his name is none other than Srila Prabhupada. So he, that person, Srila Prabhupada, whether you know him or not, still I will tell some of his statements, that I actually kept it as code of honor. Okay, what he does, क्या बोलते हैं वो? Every living being is searching after happiness, but no one knows where eternal and unlimited happiness is obtainable. सभी लोग खुशियां चाहते हैं, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि अनंत खुशी, अनंत आनंद कहाँ पे मौजूद है. तो this was one of his statement. और उन्होंने ये भी बताया, but such foolish men forget that temporary so-called happiness derived from sense pleasures is also enjoyed by the dogs and hogs. वो बताते हैं कि ऐसे sense pleasures बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जो बहुत ही छोटे-छोटे sense pleasure हैं, कुत्ते बिल्लियों के द्वारा भी पाया जाता है. और he also says the human form of life is, however, not meant for such cheap happiness. The human life is meant for attaining eternal and unlimited happiness by spiritual realization. So this is what the very powerful, bold understanding, as well as like it's called bold exclamation into the humankind about their real potential of getting happiness, actually have been established by Srila Prabhupada throughout the whole globe. So now the session gonna go take over. I mean, now it's required all of yours powerful involvement. So hopefully all of you are ready. If you are ready, if you are really ready to go ahead with this powerful pack today, which will usher you into very wonderful, powerful learning, please write down in the chat box, ready, R-E-A-D-Y, just 4 letters, R-E-A-D-Y. Okay, ready. Yeah, quickly go ahead so that I could go ahead. Yeah.
I expect all of you, please write in the chat box if you are ready to go ahead. If you ready to bear with me for just next 1 hour, please write in the chat box, and then I'll be all set. So thank you so much all of you. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में आपसे बोलूंगा. सुभजीत, सुबह ज्योति, ओके. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना अपना नाम बदल लो. नाम जीवन, मोटो, ये सब ना रख के अपना नाम बदल लो तो अच्छा रहेगा. तो एक्चुअली मैं जान पाऊंगा कि आपका नाम क्या है ना. तो अपना नाम बदल लें तो बहुत अच्छा रहेगा. ओके. So yeah, now we are actually here. Now if you are able to see this particular slide, आप slide देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है, एक जानवर दिख रहा है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या कॉमन चीज है एक जानवर में और एक आदमी में. बहुत ही सिंपल बच्चों वाला प्रश्न है. बच्चों का प्रश्न है ये कि एक आदमी में और एक जानवर में क्या कॉमन है, क्या चीज जो कि दोनों में पाया जाता है. तो बहुत ही पावरफुल रॉकेट साइंस नहीं पूछा हूं आप लोगों से, भले आप इंजीनियरिंग करने वाले हो अभी, बट स्टिल आई हैव आस्क्ड वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप लोग जवाब दीजिए चैट बॉक्स में. एक आदमी में एक जानवर में क्या अंतर हो सकता है, आई मीन क्या कॉमनैलिटी हो सकती है, क्या समानता है. फर्स्ट, क्या समानता हो सकता है, बताइए. क्या समानता हो सकती है एक मनुष्य में और एक जानवर में. I am able to see okay, feelings. विशाल is telling feelings. विशाल बोल रहे हैं कि feelings होता है दोनों में. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और बहुत कुछ है जो कि कॉमन है. अंजना कुमारी is telling both need food. दोनों खाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोनों खाते हैं. और कोई है जो कुछ लिख सकते हैं. If you think about something, thinking power and knowledge are the difference between them. Okay, difference is one thing. Difference will come later. अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन चीज क्या है. थैंक यू राजदीप फॉर पॉइंटिंग दिस आउट. कॉमन चीज क्या है दोनों में, आई मीन सॉरी, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन क्या है, क्या क्या कॉमन है. या प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. डोंट हैव इंटेलिजेंस माइंड इन एनिमल्स. जानवरों में इंटेलिजेंस नहीं है बोल रहे हैं ऋषभ. या जानवर बोल नहीं सकते हैं. यस गुलशन. लेकिन आप में से बस कुछ जन सही हैं और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सही हैं. सुबह ज्योति बोल रहे हैं बोल सकता है सर. हाँ बोल सकता है. यस करेक्ट. राजदीप बोल रहे हैं सेल्फ प्रोटेक्शन इज कॉमन व्हेन दे फील फियर. अंजना इज टेलिंग बोथ हैव वन लाइफ. ओके, all of you are correct but little correct and a little incorrect. Okay, so मैं बोल रहा हूँ कि बोल तो दोनों ही सकते हैं, सोच तो दोनों ही सकते हैं, है ना. कुछ लोग लिखे हैं सोच नहीं सकते. दोनों ही सोचते हैं. कुत्ते भी सोचते हैं और आदमी भी सोचते हैं. लेकिन एक चीज बहुत ही पावरफुल आया, उसका ये आंसर था, किन्हीं का आंसर था कि वो दोनों को फूड चाहिए, दोनों खाते हैं. दैट्स करेक्ट. सो this is absolutely correct that both of them they eat. So what we will see now, we will see really there is only both have to run for life. जीवन के लिए दोनों को दौड़ना पड़ता है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो हम लोग देखेंगे 4 चीजें जो है अल्टीमेटली कॉमन है दोनों में, जानवरों में और आदमियों में. क्या क्या है 4 चीजें कॉमन है. हम भी खाते हैं. ह्यूमन आल्सो ईट. ह्यूमन आल्सो स्लीप, राइट. हम भी सोते हैं. और ह्यूमन में भी मेटिंग होता है. ह्यूमन में भी फियरिंग होता है. ये 4 चीज बेसिकली ह्यूमन करते हैं. खाते हैं, सोते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड फियरिंग. ये मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता कि अरे मनुष्य हम हैं तो हमें डर नहीं लगता. डर सबको है. आप लोगों को डर है कि लाइफ में आगे क्या होगा, इसलिए आप अभी बीटेक करोगे, है ना. उसके बाद फिर पता नहीं तैयारियां करोगे, क्या करोगे, उसके बाद जॉब करोगे, उसके बाद फिर, है ना. ये क्या है, फियर है. तो ये फियर मनुष्य में भी है और जानवरों में तो है ही, है ना.
आप देखेंगे कि एक छोटा सा पक्षी है, छोटा सा बर्ड है, वो एक दाना चुनने के लिए जाता है, 2 बार ऐसे ऐसे देखता है कि नहीं? तो क्यों देखता है? क्योंकि डर है उसको, कहीं से भी कोई भी कंकड़ फेंक सकता है, मार सकता है। तो ये 4 चीज अल्टीमेटली दोनों में क्या है? कॉमन है। जैसे हम लोग देखते हैं जानवर है वो भी खाता है, जानवर भी सोता है, आदमी के साथ भी सोता है, आप देख सकते हो दोनों एक ही बेड पे सो रहे हैं। और एनिमल भी मेटिंग होता है ना? दे आल्सो हैव हस्बैंड एंड वाइफ टाइप ऑफ थिंग। और एनिमल आल्सो फियर, वो भी डर रहता है उनको, एक दूसरे से डर रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं? डिफेंड करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। क्यों? उन्हें डर है। जैसे भारत पाकिस्तान में डर है, भारत के पास भी डर है कि पाकिस्तान कभी पंगा ले ले, इसको किसी का मतलब नहीं है, अपना इकोनॉमिक सिस्टम को कोई मतलब नहीं है, कभी भी पंगा लेने के लिए चालू रहता है। और पाकिस्तान को तो डर है ही कि पता नहीं कब ये ना स्ट्राइक कर दे, कोई ठीक नहीं है। तो इस तरीके से दोनों में डर है, देश देश में डर है, देश के लोगों में डर है। और इस तरीके से क्या है कि ये 4 जो प्रिंसिपल है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, खाना पीना, सेक्स करना और डरना या फिर डिफेंड करना, ये दोनों में कॉमन है। हो सकता है कि हम लोग डिफेंड करते हैं मशीन गन से, बैलिस्टिक मिसाइल से, या फिर पता नहीं क्या क्या से हम लोग डिफेंस करते हैं। लेकिन कुत्ते भी डिफेंस करते हैं, जानवर भी डिफेंस करते हैं, अपने तरीके से डिफेंस करते हैं। जैसे 2 कुत्ते क्या करते हैं? दांतें दिखाते हैं, ऐसे करके ना वो एक दूसरे को डराते हैं, उसके बाद जोर-जोर से भौंकते हैं, वाक वाक ऐसे करके भौंकते हैं। तो दोनों लड़ तो रहे हैं, लड़ने का जो प्रिंसिपल है वो मनुष्यों में और जानवरों में समान है ना? तो these are 2 things are common. Then what is the extra with human than animal? अब बात आती है कि एक्स्ट्रा क्या चीज है। अगर दोनों समान है, दोनों अल्टीमेटली खाते ही हैं, सोते ही हैं, सेक्स करते हैं और डरते हैं, दोनों ही डरते हैं, तो मनुष्य में क्या बड़ा चीज है? क्या बड़ा चीज है? मनुष्य में क्या है जो कि जानवरों में नहीं है? कोई बोल सकता है? नाउ इट्स अपॉन यू, आप लोग बताइए जल्दी से, एक एक वर्ड लिखना है आप लोगों को। क्या है जो कि मनुष्यों को जानवरों से ऊपर करता है? What is the thing which is actually making humans better than animals? I am seeing some of the responses. I am able to see just now coming. It's okay. Sense. Oh, Subhajyoti is telling study, job. Okay, study and job. Human can use their mind to develop the earth, but animals cannot do this. Rishabh is telling. Okay. Yeah, correct. स्टडी जॉब कौन करता है? स्टडी जॉब कौन करता है? मनुष्य ही करता है, जानवर नहीं करता है। बिल्कुल सही। सेंस होता है किसको? जानवरों को नहीं, सेंस तो जानवरों को होता है, मनुष्यों को भी होता है। आईक्यू उनका भी इंटेलिजेंस होता है। स्नेहदीप विशाल बोल रहे हैं ह्यूमंस ऑलवेज compete to be number 1 in any field and animals also they compete to be number 1. Dear Vishal Vaibhav, animals also they compete to be number 1. Everywhere we see animals also having their own field of competition. उनमें भी competition है, खाने के लिए competition है ना? कौन जाएगा? आप एक कुत्तों के झुंड के सामने एक रोटी लेके जाओ, एक साथ सभी दौड़ेंगे, उनमें कंपटीशन लगता है कौन पहले रोटी तक पहुंचता है ना? तो उनमें भी कंपटीशन है, खाने के लिए कंपटीशन है। उस तरीके से हमारे में भी कंपटीशन है। हाँ, हमारे में भी कंपटीशन है, अल्टीमेटली खाने के लिए ही कंपटीशन है। We will see that. So sense is there in both of them. IQ means intellectual IQ. I mean quotient, intellectual quotient. Intelligence there with them, but with them also, but maybe less. Economic status, that's great. Study, job, personality, okay. तो अल्टीमेटली ये सारे चीज जो हैं ये जानवरों के पास भी है और मनुष्य के पास भी है। एंड okay. So it will be nice that you can mute yourself for time being. I mean, I can get your responses from chat box. Sneha Deepa, if you can, nice, you can mute yourself. Yeah. Okay, so let's go ahead. Okay. So what I'm telling that both of them are having these things, all things, but ultimately these all things ends up with what? Eating, mating, sleeping, defending. We have intelligence for what? Better, how to eat better, how to sleep better,
how to defend better and how to have sex better. Ultimately it comes to that only. Okay, economic status also ultimately is for that only. कैसे अच्छे से खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, अच्छे से सेक्स करेंगे और अच्छे से I mean defend करेंगे, how I am better situated. Okay, so somebody can say that yeah, but we have far better facilities. We have far better facility, like we can do coding and we can have so many different powerful technologies, right? So but they don't have. But ultimately if you see, all things are actually for what? खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छा सोना. भले ही हम लोग कहाँ पे सोते हैं, अच्छे अच्छे बेड पे सोते हैं, बहुत कुशन लगा होता है, 2-3 मोटी मोटी रजाइयां होती है, डनलप पिलो बेड है ना, अच्छे से सो रहे हैं, मे बी 5वीं मंजिल पे. कुत्ता बस वही सामने सो रहा है, लेकिन सोने के बाद क्या अंतर है? सोने के बाद बस सोना है. ना कुत्ते को पता चलता है कहाँ सो रहा है, ना आदमी को पता चलता है कहाँ सो रहा है. सोना है, सोना है. खाने का टेस्ट खा रहे हैं तो फिर उनका खाने का टेस्ट उनके लिए अच्छा है, आपको खाने का टेस्ट आपके लिए अच्छा है. खाना तो खाना है. आप भी खाओगे तो आपका शरीर का क्या पोषण होगा, वो भी खाएंगे तो उनके शरीर का पोषण होगा, है ना. और sex and defense, almost the nature is same. Somebody can say that like we can have so much great IQ that we can design different things. We can design big powerful architects, like high designs, high engineering, like Burj Khalifa and all things. But ultimately क्या हो रहा है इस बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग्स में? अल्टीमेटली 4 चीजें हो रहा है. जैसे अल्टीमेटली ईटिंग हो रहा है, स्लीपिंग हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, डिफेंडिंग हो रहा है. अल्टीमेटली यही हो रहा है. सो थिंग अल्टीमेटली ग्रेविटेट टू देयर ओनली. That's called eating, mating, and sleeping, defending. That's what Mahabharata and the Vedas, one of the great section of Vedas, Mahabharata tells very powerful statement. Mahabharata verdicts. It tells ahara nidra bhay maithunam cha samanane tad pashubhir narana dharmo hi tesham adhiko vishesho dharmena hina pashubhir samana. Very powerful sloka. It's a Sanskrit sloka. Sanskrit is most scientific language of the world, if you know it. And it has been seen, those who are actually having the practice of Sanskrit hearing and Sanskrit recitation, they have very powerful IQ. उनका intellectual level बहुत ही powerful होता है, just by reciting Sanskrit sloka, even though you don't know the meaning. This is such a powerful actually the language. It's called divine language, which is still there. So Mahabharata क्या बोलता है? Eating, sleeping, fearing and mating equal in both the animals and humans. Only dharma is a special characteristics in humans. Otherwise human equals the animals. बहुत सिंपल है, बोल रहा है आहार मतलब खाना, सोना, भय करना और मैथुन करना. मैथुन तो सेक्स. खाना, सोना, भय, मैथुन, ये जो 4 चीज है, सामान्य में था पशु की नराना. ये समान है पशुओं में और नरों में. नरों मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स. ओके. धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो. Then it is telling dharma is the only characteristics, only special characteristics in the human is what's called dharma. Okay. अधिको विशेषो है, अधिक विशेष है, धर्मेण हीन पशुभिः समान. If it's not there, then the person, a human being, actually not better than animal. Okay. So eating, sleeping, mating and defense is actually same in both of them. But only thing what make human beings far excellent from animals, that is called dharma. So what is that dharma? We shall be discussing later. But we are humans, we are masters, right? We have everything, right? But still we see we have so much of technology, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन समस्याएं भी जानवरों से ज्यादा बढ़ रही है. आपको तो पता होगा कितनी सारी समस्याएं हैं अभी लोगों के पास, स्पेशली यूथ्स, percentage youths are suffering from distress and frustration. And there are so many youths are practically committing suicide. It is just some few months before I had research done upon this. Actually, I went through all the statistics, data about suicide. तो 1 घंटे में जब तक मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा तब तक 40 सुसाइड कमिट किए जाएंगे. 1 घंटे में 40 सुसाइड. और एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली फ्रॉम यूथ. जितने भी युवक लोग हैं, युवकों में यूथ सुसाइड की जो प्रवणता है बहुत ज्यादा है. एंड देन
when they actually go ahead with this, and they land up with so many nonsense things like drugs, like wine, and all the stuff that you can see here. So these are not the problems with animals. जानवरों में ये समस्या नहीं है. आपने आपने कभी नहीं देखा होगा कि अरे एक कुत्ता सुसाइड कर लिया. ऐसा नहीं देखा होगा. उन लोग नहीं सुसाइड करते हैं. But humans are the masters. We are the masters of all the animals. We can control the animals. We can have technology. We can have everything ultimately. But why the problems are even increasing more and more? So there is a very, very intrinsic cause behind this. We shall be discussing that too. Okay. So we have, what are the problems that we'll see? What are the problems we have? Yeah, thank you so much. Someone is telling, Vishal Vaibhav is telling, more we are getting developed, we are getting dependent. Yes, correct. Thank you so much, Vishal. So 3 miseries of life. Miseries are there with animals and humans also. लेकिन स्पेसिफिकली ह्यूमंस की क्या क्या 3 तरह के मिजरीज हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा. क्या क्या है 3 तरह का मिजरीज है, सब लोग को पता है. We can actually patch them up. These 3 miseries, we can patch them up. What are those 3 miseries? The first misery is called Adhyatmic Klesh. Okay, this is the first misery, which is called Adhyatmic Klesh. Adhyatmic Klesh means the problem coming from our body and mind. Due to our body and mind, those all types of problem that comes by our own body and mind. It's called Adhyatmic Klesh. 3 तरह का समस्या है. So we are in pleasure blueprint. Okay, pleasure lifestyle blueprint. तो हमें एक एक करके हम लोग देखेंगे कि what is the things which is actually stopping us from being happy. So this is the blueprint. If you really follow, you can be the one of the happiest person in the planet. Believe me. Okay. So this is the first type of problem which comes in our life. That's called problem due to our own body and mind. हमारे अपने मन और अपने शरीर के कारण होता है. उसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश. दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश. आदि भौतिक मतलब प्रॉब्लम ड्यू टू अदर एंटिटीज. दूसरे लोगों के द्वारा दिया हुआ समस्या है. दूसरे लोगों के द्वारा दिया हुआ समस्या मतलब कि दूसरे जीवाणु, वायरस, जो भी है, विषाणु, जो भी आप बोलो. जैसे अभी कोविड आ गया, सारे लोग परेशान है, सारी पब्लिक, सारी जनता परेशान है इसके कारण. वैक्सीन निकाल दी है तो वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो क्या नहीं हो रहा है. और तीसरा प्रॉब्लम है आदि दैविक क्लेश. आदि दैविक क्लेश मतलब कि नेचुरल डिजास्टर्स का होना, मतलब कि भूकंप आना, या फिर बहुत ज्यादा रेनफॉल होना, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे वोल्केनो इरप्शन, सुनामी, टाइफून, and so on so forth. It keep coming, and we have patch up solution. सबका solution है, लेकिन क्या वो solution है? क्या वो solution है? बोलते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या हो. अब चिड़िया चुग गई है सारे खेत, तो अब जाके उसको क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते. जितने लोग मरने थे कोविड से मर चुके हैं, लेकिन क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, उसके ऊपर कोई भी नहीं देखता है. Why it happened to the whole humankind? Why this problem of COVID came? Why there are so many natural disasters? Nobody want to actually see toward that. Why people are suffering because of so much of trauma, so much of mental tension, depression, frustration, and committing suicide? Why people are taking drugs? So ये समस्या है कि लोग cause पता नहीं. But we can patch up. Okay, डिजास्टर कंट्रोल सिस्टम है, भेज दो तो कर लेगा. क्या कर लेगा? जितने लोग को सफर करना है तो सफर कर रहे हैं, बट रियल कॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट. ओके, दीज आर द 3 मिजरीज ऑफ लाइफ. आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, एंड आदि दैविक क्लेश. बट व्हाट अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स? दे आर द मिजरीज, मतलब कि मिजरीज है, लेकिन मिजरीज से भी अलग एक अलग प्रॉब्लम है जो कि हमेशा रहता है. आप लोग बोलेंगे क्या, तूफान हमेशा नहीं आते, कोविड हमेशा नहीं आता, अरे टेंशन हमेशा नहीं आता, कभी कभार आता है. लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि आप हम लोग के साथ हमेशा से हैं और सबों के साथ हैं. They are called the real problems of life. So I want you to write down in a chat box right now, what are the real problems of life? क्या क्या है real problems of life? I can give the hint. मैं आपको hint दे सकता हूँ क्या क्या हो सकता है. Real problems are those which qualifies following criteria. Okay,
ये क्राइटेरिया होना चाहिए रियल प्रॉब्लम्स का, विच इज कॉमन टू ऑल, सबके साथ होता है, सबके साथ वो समस्या है, नो वन वांट्स इट, कोई से नहीं चाहता, नो वन कैन अवॉइड इट, कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता है जितना भी चाहे। अब बताइए आप लोग कि वो कौन सी समस्या है, कैसी समस्या है। 4 समस्याएं वही बता दिया मैंने। There are 4 problems which are common to all. Nobody wants it and nobody actually can avoid it. Okay, now please quickly go ahead. So someone is telling stress. Bhaskar is telling stress. Anjana is telling mentally disturbed. Okay, mentally disturbed. Almost everybody cannot be mentally disturbed. Yeah, it's a matter of place, time, place. Distraction, attachment. Rishabh is telling distraction. Okay, distraction because you are, yeah, this one very powerful point coming, this poor health. Health is everybody's problem. Yeah, distraction, you can say that you have the problem with distraction, but क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको फोकस करना है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन चाहिए। किसी को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, उसको डिस्ट्रैक्शन की मतलब ही नहीं है। So yeah, this is one thing which is for everyone. It's called poor health, a disease. Yeah, correct. Anybody else, if you want to, please, if you want, please quickly go ahead in the chat box and write on the chat box. क्या क्या हो सकती है समस्याएं जो कि सबके साथ होता है, जिसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता और कोई भी उसे चाहता नहीं है, कोई नहीं चाहता उसे। हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, आजकल तो रिलेशन प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है। इनकम प्रॉब्लम, किसी के साथ हो सकता है कि इनकम प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। बैड फीलिंग्स, या ऑफ कोर्स ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसी चीज है जो हमेशा एक तलवार की तरह सर के ऊपर लटक रहा है। 4 समस्याएं जिसको लोग हमेशा उसको भूल जाते हैं, जिसको हमेशा लोग भूल जाते हैं। स्नेहा जी बोले इमोशनल प्रॉब्लम, emotional problem, yeah, could be there with many of them, but may not be with everyone. So what are they? I'm just really very quickly going to reveal you all. Okay. And Bhaskar is in responsibility. That responsibility could be also a problem, but for not for everyone, responsibility could be a problem. Okay, so I'll tell you very simple. Let everybody know. Everybody know. What are that? Okay, 4 real problems of life. पहला है बर्थ। बर्थ, जन्म लेना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कितनी समस्याएं हैं। जन्म लेना ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ के लिए प्रॉब्लम है। इट्स रिटन हियर, यस, बिकॉज द चिल्ड्रन इज नॉट पेनफुल, चिल्ड्रन बर्थ इज नॉट, चाइल्ड बर्थ इज नॉट पेनफुल ओनली फॉर द मदर्स। माँ के लिए प्रॉब्लम का कारण नहीं होती, बल्कि इट्स आल्सो ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेसफुल फॉर द बॉडी, फॉर द बेबी। बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। मृत्यु, जन्म मृत्यु का वहां पे ये रहता है कि कब वो डेड हो जाएगा, कब मरेगा, कोई ठीक नहीं रहता है। And you can find many times the child comes out from the womb almost unconscious. We all has come out from the same place. सब लोग उधर ही से आए हैं, लेकिन almost one becomes unconscious. Doctor slaps some or other. If he start crying or she starts crying, then doctors become very happy and parents become very so happy. So birth is really very powerful problem. Second is called old age. Don't you find old age is a problem? अभी आप लोग जवान हो तो आप लोग सोच रहे हो कि यार क्या है ओल्ड एज, बाद में किसने देखा है, लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम है। ओल्ड एज ब्रिंग्स सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन आवर लाइफ। उसके बाद तीसरा है डिजीज। डिजीज इवन नाउ यूथ्स आर नॉट एबल टू अवॉइड। बहुत सारे यूथ लोग भी आजकल 25, 30, 35 जाते जाते बहुत सारी समस्या हो जाती है। लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी, लीवर फेल, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीजों के चपेट में आ जाते हैं और उसके कारण उनका समस्या होती है। तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड एट लास्ट who can avoid this, man? Come on, death. So these are the real problems of life that most of the time we feel like, no, it's okay, it's gonna to come like far off, but it's going to come and we don't know when it's going to come. Yeah, so these are the real problems of life, which is actually mentioned and told by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Lord Krishna tells, Janam Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshanam. These are the real vision and knowledge that somebody is able to see these 4 problems. Okay. He says, so now let's come to dharma.
Dharma means what we have discussed just few slides before, that makes humans better than animals. So what is dharma of humans? So my dear friends, I'm really telling you from a core of the heart, if you really stay this with this particular session, you will get to learn about so many things. You get to learn so many things, and so much powerfully important, that that can actually create a powerful impact, positive impact in your life. So what is the dharma of the humans? मनुष्यों का क्या धर्म है? मनुष्य का धर्म है कोई इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करे किस चीज के लिए? दो चीजों के लिए। हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है? That brings to a question called who am I? मैं कौन हूँ? That's what our today's session name is, identity crisis, emerging from identity crisis. Okay. Second is why I am suffering. मुझे इतने सारे प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? तो प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, उसका मतलब कि सॉल्यूशन क्या है? हमारी आइडेंटिटी क्या है, मतलब हम कौन है? दूसरा, हम लोग सफर क्यों कर रहे हैं? जो 4 तरह का प्रॉब्लम बताया मैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, और 3 तरह का मिजरीज, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये आता ही क्यों है? I do not want them at all. वो मुझे नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए डिजीज, किसी को नहीं चाहिए ओल्ड एज, किसी को नहीं चाहिए डेथ, किसी को नहीं चाहिए फ्रस्ट्रेशन, किसी को नहीं चाहिए डिस्ट्रेस, किसी को नहीं चाहिए कोरोना, किसी को नहीं चाहिए, लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं सबके कारण। Why? It is just because of lack of inquiry. That's why the first aphorism Vedanta Sutra says, "Athato Brahma Jigyasa." So human being must inquire about this most essential 2 questions, that's called who am I and why I am suffering. Who am I and why I am suffering? This only 2 most powerful inquiry of the humankind. Only human can do this. एक कुत्ता नहीं कर सकता who am I. कुत्ता बस भौंकेगा वाव वाव, उसको पता है, उसको पता भी नहीं कि उसका नाम कुत्ता है, सब लोग नाम रख दिया है ना, उसको पता नहीं, बस बाय इंस्टिंक्ट वो भौंक रहा है, उसको पता नहीं कि क्यों दुख खा रहा है। कुत्ते को, एक गाय को, एक बैल को, एक बिल्ली को आप पूछ नहीं सकते व्हाई यू आर सफरिंग। उनको खाने पीने सोने सेक्स करने से और ज्यादा मतलब नहीं। व्हाई दे आर सफरिंग दे कैन नॉट आस्क एंड दे कैन नॉट इवन आंसर। आप लोग देखे होंगे भारत में तो बहुत सारी जगहों पे बकरियों को काट के लटका दिया जाता है। जहां पे बकरियों को काट के लटकाया गया है, उसी के पास में जिंदा 3-4 बकरियां होती हैं, जो कि उस समय बहुत ही अच्छा ग्रीन घास उनको दिया जाता है खाने के लिए। तो उन बकरियों को बिल्कुल पता नहीं है कि कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद मेरा नंबर आने वाला है, और मगन होती है खाने में। लेकिन अगर सपोज हम में से कोई व्यक्ति, हम में से 4-5 जन अगर कहीं इंटरव्यू देने गए और एक रूम में कोई गया, उसके बाद लौट के नहीं आया, बहुत घंटा हो गए, फिर दूसरा गया, वो भी लौट के नहीं आया, तो क्या आप लोग वहां पे टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। शंका क्या हो रहा है, अंदर लोग जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या कर रहा है? तो ये बस ह्यूमन बीइंग ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि व्हाई आई हैव टू अंडरगो दिस प्रॉब्लम्स, व्हाई आई हैव टू अंडरगो दिस प्रॉब्लम्स, who am I? So this only human being can ask. So we'll see this both of the questions today. Okay, so please be very attentive. Now this first question, who am I? The emergence from identity crisis is going to reveal now in front of all of you. So this is the personality, his name is Dr. Ian Stevenson. ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल थिंकर था। बस 2007 में इसकी मृत्यु हुई थी। कार्लसन प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एंड रिसर्च प्रोफेसर साइकेट्री, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने बहुत रिसर्च किया है सोल और रीइंकार्नेशन के ऊपर, कम से कम तो 20 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी है रिसर्च करके। कम से कम इन्होंने 3000 ऐसे केस स्टडीज के ऊपर रिसर्च किया है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन अमेरिकन साइंटिस्ट है और he is a physician also. So he says that in our body, human body, 60 pound person, if 60 pound अगर वेट लिया जाए तो 5 पाउंड कैल्शियम है, हाफ पाउंड फॉस्फेट है, 9 आउंस पोटेशियम है, 6 आउंस सल्फर है, और 1 आउंस क्या है? मैग्नीशियम, और लेस देन 1 आउंस इच आयरन और कॉपर है। ये सारी चीज हमारे शरीर में है। अगर टोटल मिलाया जाए इतना ही से कैल्शियम मिलेगा, इतना पोटेशियम मिलेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन मिला के टोटल
आपका कॉस्ट लगाया जाएगा तो आपका कॉस्ट कितना आएगा? 120 रुपया। हमारा कॉस्ट 120 रुपया है। आप में से कितनों को लगता है कि हमारा कॉस्ट 120 रुपया है? अगर आपको 120 रुपया आपका कॉस्ट लगता है तो लिख दो लगता है या फिर यस। और कितनों को लगता है नहीं है? अगर नहीं लगता है आपको 120 रुपया अपना दाम तो लिख दीजिए नहीं, नो। ओके, अगर कितनों को लगता है कि मेरा दाम 120 रुपया है तो लिख डालो यस, नहीं लगता है तो लिख डालो नो। ऋषभ ने लिखा है नो, ग्रेट, ओके। नॉट एट ऑल, विशाल इज सेइंग नॉट एट ऑल, सुभज्योति सेइंग नो, भास्कर इज सेइंग नो, राजदीप इज इनफाइनाइट कॉस्ट, ग्रेट ग्रेट, ओके एंड ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और बचे हुए समूह का मैं समझूं कि आप आपका कॉस्ट 120 रुपया है। अगर आप नहीं लिख रहे हो समझ लो कि आप 120 रुपए को okay, Anjana Kumari is telling no. Okay, so almost all of you told that we are actually not just worth of 120 रुपया। Subhajyoti is telling kidney hai sir, kidney hai। So we are just not the kidney, we are far better, greater and something higher than kidney। Okay, so we are not just 120 rupees worth, that's great। So who are we at first hand? So that actually is a worthy thing to be ponder about। That's what we see। Are you just worth 120 rupees? Lord Krishna says in Bhagavad Gita, what he says, देहिनवस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। Krishna says that as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death। A sober person is not bewildered by such change। Krishna is telling, Lord Krishna is telling, soul, soul को हिंदी में बोलते हैं आत्मा। आत्मा बचपन से लेके जवान होता है, जवान से फिर बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद वो जर्जर होता है, जर्जर होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि आत्मा का कभी चेंज नहीं होता और मृत्यु के समय भी वो बिविल्डर नहीं होता है, वो भ्रमित नहीं होता है, वो दुख, वो शोक नहीं करता है। सो ही इज एक्चुअली गिविंग द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच टू अर्जुन। कृष्णा इज गिविंग द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच टू अर्जुन when he is actually not ready to fight, doing its own duty, and he's telling that, oh Arjuna, you are talking and mourning about the body, you are not this body, you are soul। He's telling, okay, so embodied soul is something which is actually constant। so this is medically proven। हमारा जो शरीर है 7 साल में completely चेंज हो जाता है। अभी जितना भी सेल हमारे शरीर में है वो एक भी सेल 7 साल के बाद नहीं रहेगा। 7 साल पहले जितने भी सेल हमारे साथ थे, कोई भी सेल, यहाँ तक कि ब्रेन सेल भी हमारे साथ नहीं है। मतलब कि हमारा पूरा का पूरा शरीर डेल्टा एक्स इज completely different। Okay, so then we can find it out that really but we are the same person। 7 साल पहले आप जो चीज किए थे अभी भी आपको कुछ कुछ याद है, आपको पता है, घर वाले सभी जानते हैं कि वही लड़का है जो 7 साल पहले था, लेकिन बड़ा शरीर बड़ा हो गया है। बट वी आर द सेम पर्सन। व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इज कीपिंग अस सेम? क्या है वो जो हमें एक ही रख रहा है? दैट इज कॉल्ड सोल। लाइक सपोज somebody is handsome and somebody is beautiful, like somebody is beautiful, like people they get attracted towards handsomeness and beauty, but sometimes the same beauty after death, what happens? Nobody wants to go। this is one very famous film star in 1990s। okay, she actually died committing suicide, and after committing suicide nobody want to go in front of her, and before committing suicide she was one of the most wanted girl। okay, most wanted girl। so why? There is no feeling, there is no thinking, there is no desire, there is no moment, there is no consciousness। why? Same body। why? What was the secret of beauty? Secret of beauty was not skin, secret of beauty is soul, atma। if atma is there then beauty is there, smile is there, but soul is gone, then things, everything changes। okay, so that's what is actually science we must know। for the soul, Krishna says, neither birth, there is no death at any time, soul never dies।
Soul never has actually taken birth even, and that is our identity. We are our identity, not the body, because body is changing. अगर आप हमारी आइडेंटिटी बॉडी होती तो हमारा जो छोटा सा 26 जो बॉडी था जब हम लोग छोटे थे, माँ की गोद में थे, वो शरीर कहाँ है? अभी उससे बड़े हुए, उससे और बड़े हुए, शरीर हमारा बदल रहा है, बट वी आर द सेम पर्सन, बट सेम एंटिटी which is actually keeping us same constant, that's called the soul. But we don't find that. We feel like, oh, we are that the person who we see in the mirror. Okay, so he has not come into being, does not come into being, and will not come into being. It's not talking about soul. Krishna is talking about soul. He is unborn, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा. Bhagavad Gita 220 it tells about that. So that's what we can see. Body is like, we are not this body that we see in the mirror. Okay, we are actually inside the body, and that person is called Atma or the soul, the real driver of the bodily car. Now you can give a comparison of this body to be like a car or a machine or a robot, and a robot having no soul. But the whole system is like machine in which the real driver, the Atma, is there. Because of that, the whole body is actually moving. So now the question again comes from the previous slides. Why suffering for the Atma? Suffering for the Atma, why? मतलब कि हम लोग दुख क्यों खाते हैं? हमारा तो कभी जन्म नहीं हुआ, हम कभी मरेंगे नहीं. There is never like the time when we actually came into being. We are eternal. So why actually we are having this suffering? Why people are having so much distress? क्यों है ये? So Lord Krishna tells very clear what it tells, that all living entities are my part and parcel. जितने भी living entities हैं, कीड़े मकोड़े से लेके कोई भी है, Krishna is telling that all are my part and parcel. They are all my parts. They are all spirit souls. Okay, but somehow or other they are actually forgetting me. Forgetting me, soul suffers a great plight. So this is called Vedas. Vedas never cheat you. Vedas give you straightforward the answer. If you accept it, then you win. If you don't accept it, you be there. I mean, there is no other way, because we have already discussed in the previous sessions that by our senses we cannot figure it out, Baba. We can never figure it out that what is best for us. And the real knowledge also cannot be revealed by our senses. And forget about imaginations, thinking maybe like this, maybe like that. And the ultimate solution and ultimate knowledge, the source of knowledge is called Vedas. And Vedas tells that जितने भी जीव हैं संसार में, सभी उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं. All living entities are my part and parcel, Lord Krishna says. And forgetting me, forgetting Krishna, soul or the jiva, suffers a great plight. It's mentioned in Srimad Bhagavatam. In Sanskrit, it's mentioned, Janasya Krishna Vimukhasya Daiva Adharmaselasya Sudukhitasya. It's mentioned that Krishna the Vimukhasya, the public, the Janta has become averse of Supreme God Krishna or Narayana or Vishnu. And because of that, they are actually getting a lot of misery. Sudukhitasya. Dukh matlab ki problem, और सुदुख मतलब कि बहुत ज्यादा problem. So in this way they are committing adharma, and adharma brings a lot many problems. Okay, so forgetting Krishna, soul wanders. So this is a particular video you can see. So very wonderful video here for all of you. So यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि सोल नहीं बल्कि एक शरीर में अपने को बदल रहा है. I mean प्लेस बदल रहा है, शरीर को बदल रहा है, बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से मृत्यु. बल्कि
अन्य दूसरे योनियों में भी, दूसरे जीवों में भी अपना शरीर को बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है? बस जानवर से आदमी, आदमी से जानवर, जानवर से प्लांट, प्लांट से कीड़े या कीड़े से एम्फीबियंस, एम्फीबियन से मे बी एक्वेरियंस, और मे बी पूरा पूरा चल रहा है। But human life is very important, very powerful place. Human life is a junction. Human life is a junction. Junction मतलब कि अब देखे होंगे बहुत सारे जंक्शन से आप लोग गए होंगे। जंक्शन में क्या होता है, वहां से बहुत बहुत सारे रूट्स के गाड़ियां निकलती हैं, है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े जंक्शन देखोगे, मुगल सराय जैसे हो गया, या फिर प्रयागराज हो गया, तो वहां से क्या है कि बहुत अलग अलग रूट्स में, है ना, ट्रेनें निकलती है वहां से। ह्यूमन लाइफ इज आल्सो ए जंक्शन। वहां पे आपको चॉइस मिलता है कि आप कौन सा रूट लेना चाहते हो। दो रूट है, मेनली दो रूट है। एक रूट है अंधकार का रूट, डार्कनेस का रूट, अंधतम प्रविशन्ति। एक रूट है डार्कनेस का, अंधकार का। पाथ लीड्स टू डेंजर एंड डार्कनेस। बहुत आगे क्या होगा, खतरा है, बहुत खतरा है और बहुत समस्याएं हैं। और दूसरा रास्ता है उजाला का या फिर लाइट का, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो दो रास्ता हमेशा है। एक अंधाधुंध आंख मूंद के कुछ भी करने वाला रास्ता जो कि अंधकार को ले जाएगा, एक जान सोच समझ के चलने वाला या फिर नॉलेज में रह के कार्य करने वाला रास्ता है, जिसको बोलते हैं ज्योतिर्गमय, तमसोमा, अंधकार से उजाला की तरफ जाना। तो आप लोग के पास ये ऑप्शन है, आप लोग कौन सा ऑप्शन मारते हो, like which option you like, upon you. If somebody is liking the darkness one, then you can write down it in the chat box D. If you like to go into light one, you can write on the chat box L. Okay, let's see. Okay, Anjana is saying L. Okay, L. Okay, Rishabh is saying light. Yeah, Vishal also light. Gulshan telling L. Okay. Rajdeep saying a dark one. Great. There is someone who is there for the dark one. Great. Rajdeep, I want to have a wonderful meet with you. Rajdeep told 3 times that you need to go to dark one. Okay. Bhaskar is telling light. Okay. Great. If anything, anybody of you miss out, you can also choose. There is no third option. Anna. Which one are Subhajyoti is telling light. Okay. Okay. So that's great. So anybody missed out, we can also choose, because we have only 2 options. It's digital 0 or 1, बीच का कुछ नहीं है, 0.5 नहीं है, ठीक है, या तो light या तो darkness. Okay, so the human life is a junction with having 2 paths, and now we are in the situation that we must choose which path to actually take. But taking a long journey toward the darkness, after time, many times becomes very problematic, very difficult to return to into the light, the life of light. Okay. So it's very dangerous. So even the Bhaskar is telling that you want to go to darkness, but still I have faith that of course you don't want to go to darkness, but he's just kidding. So actually a thing becomes very happy and very clear and very assured in the path of happiness. Okay, so hopefully all of you are actually willing to go to a path of happiness, pathless to happiness and light. Okay, the most easiest way for happiness in Kali Yuga, as I've already told you before. Okay, Vedas actually tells, वेद बताते हैं कि खुशियों का, जीवन में खुशियों को लाने का सबसे आसान तरीका ये क्या है? That's called meditation, specifically in this age of Kali Yuga. That's called mantra meditation, that we discussed in the previous session. So how many of you are actually acquainted with this mantra meditation before, or Hare Krishna mantra? If you are acquainted, मतलब कि आपको उसके बारे में सुने हैं, देखे हैं, जाने हैं, कुछ पता है, तो आप लोग लिख सकते हैं यस. नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं, तो उसके बारे में लिख सकते हैं नो. ओके, yes or no. If you have ever heard about this mantra meditation, okay, Hare Krishna Mahamantra, that we also had discussed in previous session, you can write it in the chat box yes, or if you have not yet came across with this knowledge of Vedanta Sutra, that's called Mahamantra, then you can write in the chat box no. Yes, quickly go ahead in the chat box. We are just about to finish our session. Quickly. Yeah,
There are only two options, yes or no. I don't mind anything whether you yes or you say no. Okay. Rajdeep is telling, I know it's difficult, but seriously, I will choose the dark one if you give the options. Seriously, I will choose the dark one if you give the option. Okay, maybe Rajdeep is telling that, I should not have given option. If we give the option to the people, they will go to down only. मतलब कि spontaneously लोग darkness में जाना चाहते हैं. Spontaneously लोग गलत काम करना चाहते हैं. Yes, correct. So Rajdeep, you are correct. If I philosophically understand you correctly, that's great. Gulshan is telling yes, Anjana is telling yes, and some more of you. If I don't mind, if you don't know it also, you can just tell that no, there is no problem. I can introduce that with you. So today, yeah, Rajdeep is telling yes, Bhaskar is telling yes. Okay. Okay, so most of you are actually had acquainted with this particular Mahamantra. So today we are having very special session with is chanting this holy name, a very powerful session of mantra meditation. Okay, so how many of you are ready for it? How many of you are ready for it? It will take max maybe 7 or 8 minutes. Okay, come on. How many of you are ready for this powerful mantra meditation? Okay, so yeah, ready. Rishabh telling ready. Anjana, yes, ready. Okay. Yeah, please go ahead. And this is actually the last section of our today's session. So please, I need all of your readiness so that I could quickly go ahead. Yeah, correct, Bhaskar. We have to just meditate now. This mantra meditation is something which can be done at any time. Okay, so there is no problem. There is no question of time. Subhajyoti is telling ready. Okay, so all of you are ready. Correct. Okay, thank you so much for giving willingness for this mantra meditation. So I just request all of you. That please just follow the thing what I'm going to tell you all. Okay, what you have to do, you have to just sit straight. I mean, straight backbone should be straight. Okay, just close your eyes. For time being, I'll tell, you can open also. Okay, and after that there is a particular mantra. These are the 5 personalities who actually have given this the holy name of Hare Krishna Mahamantra. So, and you have to recite this sloka. This is the sloka about this Panch Tattva, and after that comes Hare Krishna Mahamantra, this sloka. Okay, so this sloka we shall be reciting one time, only once. Okay, and after that this sloka will be reciting one, not 8 times. How many times? One, not 8 times. Okay, and we'll finish this mantra meditation. So please keep straight. If somebody there aside of you, you can, you can tell him that he can consider you that you are actually in meditation for 5 to 7 minutes, and then everything will be set. Okay, so this is the particular mantra I will speak. You can also recite after me. Just you have to audibly recite so that you could hear at least. You don't need to just loudly tell it, as well as not so feeble that you won't listen yourself. It should be sufficiently audible to your ears. Okay, so I will recite. You can also recite after me. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Okay, so this is called Panchatattva Pranam Mantra. And then comes the Mahamantra chants of Upanishad, Kalushantur Upanishad, Hare Krishna Mahamantra. And this Hare Krishna Mantra we shall be, we can see it and we can meditate also. There is no problem. But if you remember it, you can close your eyes. If you cannot remember, then you can see it and you can chant audibly so that you could hear yourself. Okay, it goes like this. We'll chant together. Okay, not repetition. We'll chant together. Okay, fine. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Okay, thank you so much, all of you, for being for 10 minutes all together with this mantra meditation. So congratulations, all of you. And I just want to ask from you all, Gulshan is telling too late ho gaya, sir. So just we are actually at the end of our today's session, because today is the last session. So we actually taken some more time from you, and it's not wastage of time, rather investment of time. So I'll just ask you how you are feeling all out there, and I'll just have a little announcement, and you can be free. So really, to get something good, we need to invest, and there is investment of time and investment of consciousness. That's very much great. And this process of this mantra meditation is something which can bring you very powerful empowerment in your life. Feeling refreshed, Vishal Vaibhav. Thank you so much. If you really apply it, you will feel a lot of
breakthrough in your life, your concentration level increasing, your IQ increasing, your MQ increasing, feeling relaxed. Okay, Anjana Kumari, and yeah, so of course, and this is actually the way of happiness, principled around, geared around what we have discussed just previously, that people are actually faced their back toward the supreme god, and that's why people are actually doing so many, having so many problems, and that all those problems having only one remedy into actually this chanting the names of Lord Hari. Okay, so a small little announcement for all of you, very important one, that we have next week a virtual Sankalpa camp and certification session. Okay, so don't miss this, all of you. You must attend this virtual Sankalpa camp. This is a very powerful camp in which you will be actually getting so many wonderful, wonderful things. I mean, another breakthrough in your journey of your life. So you are actually one of the most fortunate souls on the planet who have this particular knowledge of Vedanta, which is so deeply and so much nicely elaborated by Srila Ved Vyas 5,500 years before on the planet for the most fortunate souls of this world. Okay, so I'm telling you very frankly, we are not hiding you anything. We are telling you very frankly, the whole world is going to come Vedic, and they are now recognizing the value of Vedanta and the real way, the way of life actually one should actually live with. Okay, so all people are actually becoming Oriental, but Indians are having problems because Indians, they are thinking that we are something less from the outsiders and Westerners, but actually it's not so. So these are the things what we will be having in Sankalpa camp. Ascending from fear to love, very powerful session. Then most auspicious, there will be Mangal Arati session, and also we'll have most vibrant mantra meditation and shower of great happiness. Okay, that's awaiting for all of you, and as well as the certification session will be on. So at last, thank you so much, all of you. I pray and hope all of you remain very healthy in your lifestyle, in your life. And this is the end of the 4-session journey of Pleasure Lifestyle Blueprint. Okay, if you have any question, if you have anything to ask, and like, you can just ask me through call, and you can ask, of course, Indranil Bhaiya and Amia Bhaiya, as well as you can ask me too in the chat, in the Telegram or WhatsApp, or you can phone me. Okay, so I end here. Thank you so much for bearing with me for this all days, practically continuously 4 weeks. Okay, so I am really very much positive toward that. Some of you have given response like, thank you, sir, Vishali, telling Bhaskar, telling Anjana. Yes, sir. Thank you, Rajiv. Okay, thank you so much. And Rajiv, I will get to you why 108. 108 is very auspicious number in the Sanatan Dharma, and I will tell you a detail personally. Okay, not getting too much into this. I'll stop here. Thank you so much. You will be getting the quizzes also for this from Indranil Bhaiya. You can carry on with the cues, and thank you so much. Okay.